your action and reaction will create your image, will create your productivity, will create your name, fame, and game. But anything, everything is depend on one particular event, and what is the reaction or your action on that event. Suppose that in my family, suppose that in my family, or you can take the example of in society there is some fight between 2 and 3 person. What I am doing, just I'm watching or I'm just making the video clip. Okay, then one thing, one event is going on ki 2 person or 3 person is fighting with each other. All person is giving doing abusing every each other. Okay, and my what I'm doing on that particular event, just I'm taking video clips so I can forward to my friends or my relative. uh, let's see what's happening in life and what kind of the problem they are facing. Okay, but if any person has come in that fight and he has stopped or he tried to solve that issue, so that person is considered as the best person, and so other person who is watching or who know this particular person has stopped that fight or he has taken initiative to do mediation between both party or three party in this fight, then in society or any person who know about this particular event, so they have the some regard or you can say respect to particular person. So my only one thing ki whatever happening in your life, in day to day life, every time, every moment, there is a some event in your life, and on that event or on that occurrence of event, whatever you have taken the action or you are giving the reaction, that will that provide your image, aura, as well as that will decide where you will go. So today we have the topic one event and your action and reaction. So whatever you have the question, you can ask or you can chat so that we can have the discussion, because it is not a textbook story, textbook theory. कि जहां पर सपोज दैट कि इट इज नॉट ए इनकम टैक्स और इट इज नॉट ए कंपनी एक्ट कि जहां पर जो लिखा हुआ दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज द लाइफ एक्सपीरियंस एंड जस्ट आई एम शेयरिंग व्हाट एवर आई हैव लर्न इन माय लाइफ. So today topic is the event in life and your reaction on event. तो जो भी हमारे और आपके लाइफ में हो रहा है उस पर हम क्या रिएक्ट करते हैं, हाउ वी रिएक्ट, इसी से सारा चीज डिपेंड करता है. तो टुडे वी विल have some discussion on life as well as the business, or whatever you have in mind, so you can discuss with me so we can analyze कि हाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए और if you have done this thing तो उसका impact क्या निकल के आता. ओके, तो your identity will depend कि what's happening in life in day to day life, जो भी life और day to day life में जो भी हो रहा है, what you thought, आप क्या सोचते हो about that event, and what you take action या what is your reaction on that particular event. जो भी event हो रहा है मेरे आसपास at any moment, every time, in office, in home, in society, with my friend, with my relative, मतलब everywhere something is going on. Suppose that I'm going in metro and some person is fighting कि मेरे को जगह नहीं दे रहे हो या one person has lost mobile. तो this is the event and what we thought. मैं क्या सोचता हूँ, अच्छा उसका मोबाइल गया ना, या फिर some pickpocket had stolen their mobile. मेरा तो मेरे पास है ना, I don't care. Okay, so this is your thought, and after that you have the reaction. Like you thought कि मुझे there is no issue, मेरे को नहीं देखना है, मेरे को नहीं समझना. What I do, you take sideline और किनारे में जाके आप खड़े हो जाते हो. If you want, you have the curiosity कि what happened with that particular person, आप वहां पर जाते हो. If that person has given the has told you a story कि once he enter or she enter, तो दो तीन लोग एक दूसरे से इन और आउट में टच हुए और पर्स से या हाथ से they have taken
their mobile. So if you know that story, so next time what will happen ki when you are entering in metro, train, bus, anywhere, so you will be careful. You will keep your mobile phone in pocket or in bag or in handbag, whatever you want to, or if you have kept that mobile in your hand, so you will hold very tightly. Okay, so that I'm saying ki whatever the happening event in day-to-day life, in every moment, so what you thought and what you take the action or reaction, that will create your persona, that will create your impression, personality, as well as that will create your identity in your life, whether it is the personal life or business life. Yeah, so this is the one famous photographs of Newton's. एवरीबडी नो कि न्यूटन जो एक स्टोरी है, मतलब व्हाट्स हैपन इन रियलिटी आई डोंट नो, इवन यू डोंट नो, वट एवर वी हैव द स्टोरी, वी नो कि न्यूटन हैज डिस्क्राइब लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी चीज अगर उसको ऊपर फेंका जाए या ऊपर से रहता तो नीचे आता है. ओके, तो देयर इज द वन स्टोरी कि ही वाज सिटिंग अंडर ट्री, और अंडर ट्री पर क्या हुआ कि ही वाज रीडिंग सम बुक और ही वाज प्लेइंग समथिंग, एंड ऊपर से एक एप्पल गिरा. ओके, और उसके सर पर गिरा या उसके आसपास गिरा. ऐसा तो है नहीं कि दिस इवेंट हैज हैपेंड ओनली फॉर द न्यूटन. इससे पहले भी लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पर से सेब, ऑरेंज और एनी काइंड ऑफ फ्रूट इज ड्रॉपिंग टुवर्ड्स अर्थ. ये ऊपर से कुछ भी गिरता है, केला हो, फ्रूट हो या एनीथिंग. ओके, तो वो धीरे धरती के ही मतलब कि नीचे ही आ रहा है. कभी भी कोई फल या यू कैन से फ्लावर नेवर गो अपस्टेयर टुवर्ड्स स्काई नहीं जाता है, ये कमाता है टुवर्ड्स अर्थ. तो ये तो दुनिया में हर कोई देखा था, लेकिन ही स्टार्टेड न्यूटन स्टार्टेड टू थिंक कि आखिर ऐसा हुआ क्यों. ओके, न्यूटन स्टार्टेड टू थिंक कि how it's happened. Then धीरे धीरे सोचते सोचते and he had researched something, then he found the क्या कहता है, he found rule, gravity rule he has developed and he found. Okay, तो इवेंट हुआ इनके लाइफ में, और he started to think कि ये आखिर हुआ क्यों, ये धरती की तरफ ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर वहीं पर क्यों नहीं अटक गया. और ऐसा तो है नहीं कि जिस टाइम गैलीलियो के न्यूटन के साथ ये हुआ था तो इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ. everyone has seen that particular event, but no one has thought, or they have thought but they have not taken such kind of the action. So आज टुडे हिस्ट्री हम लोग सिर्फ न्यूटन को याद रखते हैं और दुनिया में किसी इंसान को याद नहीं रखते हैं फॉर द रोल ऑफ ग्रेविटी. तो दैट आई वांट टू से कि जो भी हमारे और आपके लाइफ में एक्शन होता है, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, और यू हैव टू एनालाइज कि आखिर ये चीज हुआ है तो आखिर इसके पीछे व्हाट इज द रीजन, एंड इफ इट इज द प्रूवन और इट इज द गिवन द स्टोरी, yeah, even you can give your view to public, to society, then you will consider as the innovative person. Suppose that in today time there is almost 80%, 95 या 99% you can say कि everything we are aware. Okay, but when you have described in your word, that description or that your article, your view is considered, and that create you as a different person. So my only one thing I want to say कि जो भी इवेंट हो रहा है आपके लाइफ में, आपके आसपास, ओके, you have to thought, you have to think, and you have to take action कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों. अदरवाइज आप और हम सोचेंगे छोड़ो ना, होने दो ना, नीचे गिर रहा है, गिरने दो ना, व्हाट विल हैपन, मेरे को क्या करना है. तो you will not create that kind of the persona, you will not create that kind of the aura, that or your personality will not be मतलब कि long lasting in history or in your मतलब कि in your family or in your friend circle anywhere. Okay, so that you have to understand. And this is the one famous story, once more कि
जेम्स जेम्स वॉट हैज इन्वेंटेड स्टीम इंजन, ठीक है। एक थॉमस थॉमस व्हाट इज द नेम ऑफ द थॉमस Egwan, yeah, there is the one person whose first name is the Thomas, and he has invented engine, but he has not given the such kind of the power. So James, this is the one more famous picture, and you know a story. James Watt was seeing the kettle, or there is the some more story. He was in kitchen, जहां पर उसकी मदर खाना बना रही थी, और पतीला में जो ऊपर का जो बर्तन था, या यू कैन से द ढक्कन, वो बार बार ड्यू टू स्टीम वो अप डाउन हो रहा था। ओके, देन ही स्टार्टेड टू थिंक इट मींस कि इट हैज सम पावर, तो इफ वी प्रोवाइड द लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ स्टीम, देन इट विल रन और इट कैन टेक समथिंग। ओके, तो ऐसा तो है नहीं, एवरी वुमन हु वाज इन किचन बिफोर दैट, उन्होंने ये चीज देखा था। इवन लॉट्स ऑफ पर्सन मेल आल्सो हैज सीन, बट वो वहां पर सोच नहीं पाया। ही हैज थिंक एंड ही ट्राई टू इन्वेंट समथिंग, एंड आफ्टर सम टाइम ही इन्वेंटेड स्टीम इंजन और उसको पावर दिया। ओके, तो जस्ट आई वांट टू से ओनली वन थिंग कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इन योर नियर बाय, आप उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू know कि what is the reason, and if you found the reason nearby you, okay, कि ये क्या चीज हो रहा है, या you got the some answer, yeah, this is the reason कि it's happening. Even in spite of that answer, you can provide in your simple word. So जो आपके आसपास के लोग हैं, या any person who know, or if you want to grow or you want to create your name and fame, तो आप अपने वर्ड में, अपने लहजों में उस चीज को डिस्क्राइब करें, so other person will also aware कि what you thought and what you have the view. Okay, so that we have taken the example of two from मतलब at least 200 years, 300 years old story. Today I'm not taking any example of Ramayana and Mahabharata, just I'm taking the example of the modern world, and I have the another example that there is no need of identity, and there is no need to describe him. He is the Mahatma Gandhi, and we know कि जब भी ये अंग्रेजों से सामना करते थे, ओके, इन्होंने कभी भी हाथ नहीं उठाया, और ये इनको अगर एक लाठी मार, मतलब कि दे आर बीटिंग, चाहे वो जितना भी अंग्रेज लोग मारते थे, ओके, ही हैज नेवर रिप्लाई विथ दैट पर्टिकुलर एक्शन कि वो तुम मुझे मारे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, ये उन्होंने कभी नहीं किया। तो व्हाट वाज द इवेंट इज हैपनिंग इन लाइफ कि यू कैन से द इंग्लिश पर्सन और ब्रिटिशियर्स वाज हिटिंग हिम, बट ही हैज taken action, or his thought कि no, I have not to reply, मुझे इनको हिंसा नहीं करना है, इनको करने दो। he has invented one particular rule, or he is believing that rule कि इनको मारने दो, मैं इनका अहिंसा से ही जवाब दूंगा। ओके, देन वो इनको he was thinking कि एक ना एक दिन आदमी सुधरेगा। ओके, तो event is happening in his life. The Britishers is beating him, is fighting with him, but he is not replying with the same condition. He is also not beating, or he is not taking any kind of क्या कहता है हिंसा। यू कैन से कि इन्होंने हिंसा पर कभी भी नहीं उतरे है। ओके, तो दैट आई वांट टू से कि whatever happening in your life, whatever the event is going on, you have to thought and you have to take action. That action create your persona. Okay, and last one, just we will have the one more snap. You can see जब भी आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरते हो, whether it is मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, anywhere, तो what happened, आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते थे आज से 5 साल 10 साल पहले। आज क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम बाहर आते हैं या तो वी बुक ओला उबर ऐसे करके हम बुक कर लेते हैं। थिंक अबाउट दैट
पीरियड जहां पर ओला और उबर नहीं था, आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले, व्हाट हैपेंड, हम बाहर निकल के आते थे तो बहुत सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले जो होते थे, दे जस्ट कैप्चर अस, चारों तरफ से आ जाता है, हाँ भाई साहब कहाँ जाना। अगर गलती से आपने बता दिया, इफ यू टोल्ड यू ओके कि भाई मुझे तो लक्ष्मी नगर जाना है, मालवीय नगर जाना है, साउथक जाना है, नोएडा जाना है, गुड़गांव जाना है, ओके, तो सर मैं तो 200 में ले चलूंगा, 300 में ले चलूंगा, 150 में ले चलूंगा, बट नो बडी विल टेक यू बाय मीटर, थ्रू बाय मीटर, नो ऑटो वाला विल स्टार्ट मीटर इन रेलवे स्टेशन, ओके। उस टाइम एक ऑप्शन होता था, से 5-6 साल पहले, वी हैव टू गो फॉर द प्रीपेड, जहां पर वी हैव ट्रस्ट कि चलो दिल्ली पुलिस का है या उसमें पुलिस इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं चार्ज करेगी, ओके। तो वी हैड द ओनली दैट ऑप्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो व्हाई आई हैव टेकन दिस थिंग, ये चीज आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, एवरीवन वी आर फाइटिंग दिस सिनेरियो, बट ये प्रॉब्लम ओला और उबर को समझ में आया, अब दे हैव टेकन such kind of the action and now they have created the business model. Today we are not going to discuss कि whether Ola और Uber में कितना loss है नहीं है, but I want to say कि this problem everyone who has faced before the Ola और Uber era, okay, but we have not never thought कि ऐसा भी कुछ solution लाया जा सकता है, ऐसा भी it can be done. तो जिसने किया, ओला उबर हैज इन्वेंटेड, आज की डेट पर ओला उबर कल को मान लो कि ड्यू टू लॉस और एनीथिंग वो लॉस्ट भी कर जाता है, नहीं भी रहता है, तो सम अदर पर्सन विल कम और इन हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर इट विल बी द नेम, ओला एंड उबर विल बी द इन नेम ऑफ द हिस्ट्री एंड एवरीबॉडी विल टॉक कि हाँ जी हमारे आज से 40 साल बाद अगर ओला और उबर नहीं रहता है, इवन दैट वी विल डिस्कस विद आवर ग्रैंड चिल्ड्रन कि यार हमारे टाइम पर देयर वाज सच काइंड ऑफ द फैसिलिटी कि जस्ट यू हैव द ऐप एंड आपको घर से या रेलवे स्टेशन पर वेयर एवर यू आर, देयर इज नो नीड ऑफ कार, देयर इज नो नीड टू हैव द योर ओन कार, आप जहां पर भी खड़े हो आप सिर्फ ऐप में दबाओ और वो आपके पास आ जाता है। तो कल को ये प्रॉफिटेबल हो ना हो, एटलीस्ट दे हैव क्रिएटेड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट आई वांट टू से कि वी हैव लॉट्स ऑफ इवेंट हैपनिंग around us, but we have to thought क्या इस इवेंट के ऊपर कुछ implication हो सकता है, whether we can have the personal development, whether we can have the some business opportunity, that I want to say कि every event is provide your personal development or they provide the business opportunity. So you have to understand, you have to thought कि आपको करना है या नहीं करना है। यह हमारे साथ हमेशा हुआ था कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो न्यू दिल्ली पर हो या कनॉट प्लेस में हो तो जस्ट ऑटो वाला चार्ज करता बोलता था कि सर वी विल चार्ज द 50 रुपीज, तो व्हेन वी से कि मीटर से चल लो, सर मीटर खराब है या आपको पता है सर गैस का दाम बढ़ गया, मतलब दे हैव द लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस बट दे डोंट वांट टू स्टार्ट मीटर, ओके। एटलीस्ट इन दिल्ली तो मीटर तो स्टार्ट हो जाता है, इफ यू विजिट फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, मीटर तो होता ही नहीं है, स्टार्ट कहाँ से होगा, ओके। जस्ट दे चार्ज 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 150 रुपीज, देयर इज नो ऑप्शन, मतलब कि इफ यू विजिट इन फरीदाबाद और गुड़गांव और नोएडा फॉर द 5 किलोमीटर एटलीस्ट यू हैव टू पे 100 रुपीज, बट दैट सेम डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इन दिल्ली, अगर कोई मीटर से चलने के लिए तैयार हो गया तो इट विल बी मैक्सिमम 50 to 60 रुपीज, बट इन एनसीआर इट इज 100 रुपीज। तो आज की डेट पर क्या हुआ कि वी आर नॉट वेटिंग द ऑटो कि भाई घर के बाहर जाना है ऑटो वाला, व्हाट वी डू कि हम मोबाइल ऐप लेते हैं एंड वी बुक ओला, उबर और एनी बाइक जो भी है हमारे पास, ओके। तो जस्ट आई वांट टू से कि व्हाट एवर द हैपनिंग अराउंड अस, वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू टेक द सम action or we have to analyze that scenario whether we can take the some personal development, whether we can take the some business opportunity or not. So right now if you think, if you see any kind of opportunity like Zomato, XYZ, ये सारा क्या है, सारा they have analyzed the situation and after analyzing situation they have come up with the solution, okay. So my ultimate
लाइन इज दैट कि जो भी आपकी लाइफ में आसपास हो रहा है या यू हर्ड यू नो, आप उसको एनालाइज करो, देन you can get personal benefit as well as you will have the some business opportunity. Okay, so now you have any question answer we can discuss, and if I'm not able to describe in the very good manner, then you can ask any question or any example so we can discuss. तो समाना जी आप इसको लाइव स्ट्रीम से हटा सकते हैं।